Assalamu alaikum and very good morning to all of you. This is lecture number 3 for financial markets and institutions analysis. We are talking about the behavior of interest rates. This chapter is following the basic understanding of the yield to maturity concepts. We have learned about the yield to maturity for different products like simple loans, fixed payment loans, coupon bonds, and discount bonds. And now in this particular chapter, we are looking at how interest rates are determined and what kind of theories we use to find out what interest rates are and how these interest rates move over time. Interests are charged on money, and money is not a commodity that we use directly. Money is something that we use as an indirect demand. Like, say, for example, we use money to buy goods. We don't money for money. We don't need money for its own sake. We need money for buying things. Similarly, when you got the wealth, when you get the money, you make different choices. Like, you make investments with it, you buy bonds, and you keep some money as a cash. So what actually we define interest rate as? We define interest rate as the rent on money. It is the cost of borrowing that people have to pay when they use somebody else's money. Like, say, for example, if you come to me and you ask my money to use for yourself, I will not give you for free. I'll charge some kind of interest on it. So it is a price of a money, but the money itself doesn't have a demand. Like, say, for example, you find out the price of any good with its own demand and supply curves. Like, say, for example, if you want to know how much a mobile phone costs, you can find out how many mobile phones are being demanded and how many mobile phones are being supplied. Somehow, with the interaction of these demand and supply equations, you can find out what exactly the price a company should charge for a mobile phone and what price a consumer should pay for a mobile phone. But money is not something that is traded in this way. The money is not needed for money. Money is used for buying things. So money actually has got an indirect demand. So determining the price of money is an indirect kind of endeavor. We use different proxies or kind of theories to find out the demand for money. We try to find out that how the money is traded and what kind of uses it actually go into. Like, say, for example, when you have a money, you buy bonds. When you have a money, you keep some money as a liquid in form of cash. And if you think about that, like, if you want to know the price of that money through the assets that you buy, that's what something is we trying to do. Like, we are trying to find out the value of the interest rates of the bonds, value of the interest rate on money by using its different uses. Like, say, for example, one of the uses of the money is to buy bonds. When do you buy more bonds? When do you buy less bonds? The bond is an asset that you invest in. And the company that issues that bond is a liability to it. Like, it actually creates a liability. You buy an asset, you earn money on that asset, and that asset's like interest rate on money is your income. And the interest that the company pays on the bonds is its expense. So the asset that you buy depends on, like, say, for example, who buy more bonds. The people who have got more wealth. The people who are wealthy, they buy more bonds. Like, say, for example, if a person who is poor, he doesn't have got enough money to actually make both of his ends meet. He cannot afford to buy bonds. The people buy bonds when they have got value. They have got wealth. And so we were talking about different kinds of factors that determine the demand for bonds, like wealth. And similarly, the people buy bonds and people buy assets when they expect higher returns on them. And similarly, like, when you buy these kind of assets, you always have got very important consideration of risks. You don't want to put yourself into unnecessary uncertainties. You always try to cut down the risks. You always try to reduce the risks on your investments. So generally, the assets which are
more riskier, the riskier assets actually get lesser demand. So it's a quite a simple equation, you know, like if you want to buy some assets, you want to be safe. Not only you want to earn money, but you also want to be safe. So as I told you, like, you know, the market is not populated by the same kind of investors. There are some investors who like to take risks, who love to take risks, but you know, like, except those all people who are into this kind of a business that who earn by taking the risks. Generally, the people are of different kind. They don't want to take higher risks unnecessarily. And similarly, when you buy assets, these were some of the determinants of the demand for an asset. And we were talking about the wealth, expected returns, risk, liquidity. And this liquidity is important, you know, like people want to have, they don't want to get stuck with any kind of investments. They don't want to get in such kind of a situation where they once enter and they don't have got a place to live, or they don't have got any kind of opportunity to get back on that investments. Like they cannot get their money back if they want to. So they generally try to have such kind of investments, which, you know, like have got the kind of like liquidity available. Like if they are able to cash, like say for example, you don't buy such cars which you are not able to resell. And similarly, the mobile phones, you don't buy such mobile phones which you can't sell. Okay. So what next? Okay. So this is what basically is something when your wealth increases, the assets that you demand increases. Similarly, the expected returns on some assets, if they increase, you buy more assets, and the risk relative to other assets increases, you buy less of them. And when the liquidity increases, you buy more assets. So it's quite a simple kind of a relationships. You can ask any questions if you have read this chapter after the last class. You can ask any questions if you want. Like, you know, you have to just raise your hand because you can't turn on your mic right now. So if you want to ask any questions, please just raise your hands. Okay. So another kind of like, you know, the theory that we talked about was the supply and demand of the bonds. We discussed about the demand curve for the bonds. If you drive or take, like, you know, just look at the quantity that people demand for different kind of bonds, and you plot it against the interest rates or the price of the bond, you get two different kinds of relationships. Like say for example, if you draw this curve against the price of the bond, and that has got a usual kind of relationship for anything, keeping other things constant. If the price of that increases, its demand decreases. And something similar happens with the demand curves of the bonds. But you know, like this is the opposite to the interest rates, because we know that when the price of a bond increases, the interest rate decreases. So, and when the price of the bond decreases, the interest rate increases, and the price of bond increases, the interest rate decreases. So, you know, like if you draw this demand curve against the interest rates for the demand curves of the bond, you will have a positive kind of a relationship with the demand that you like, you know, that the quantity that you demand of the bonds and the interest rates on them. And similarly, the bond supply, the supply that you make of the bonds is positively related to the price of the bond. But if you draw this particular curve against the interest rates, that has to have a negative relationships. Okay. So any questions? This is a further explanation of this particular relationship. Here, basically, we have got two y-axes, and one y-axis is a mirror of the other axis. So like on the left hand side, we are measuring the price of the bond, and the right hand side, we are measuring the interest rates on bond. Where the price of a bond, which has got the face value of $1,000, the interest rate is 0%. And as the price goes down, the interest rate goes up. Like say, for example, for the price of a bond, for the bond which actually has a price of $950, will give you 5.3% return.
And similarly, $900 bond will give you 11% return. And similarly, 850 rupees dollar bond will give you 17.8% return. And something similar like it is happening with this 800 and 750 that you can see here. So you find out equilibrium price, you plug in this value into this formula, because you know already the face value, and if you know the equilibrium price and you substitute like this P with this equilibrium price, the star actually is for the equilibrium price. So what do you get? What do you get when you substitute the equilibrium price of the bond here? What do you get? We also talked about the loanable fund terminology. The loanable fund terminology is related to this amount which actually are loanable, like the demand for loanable funds and supply of loanable funds. Who supplies loanable funds? The people who earn money, the people who have got wealth, people have got income after consumption, whatever money is left to them, is left with them, it is available for lending to other people. And people want to do that. They don't want to keep cash. What will happen if they keep cash? Whatever money is left with the people, like, after making all their consumptions, they don't want to keep them with themselves. They just want to lend to other people. So this is the amount which is loanable into the market. Like, they can lend it to the other people. And this is what basically they do. And when this loanable fund supply increases, when the interest rate increases, people save more, people invest more, people actually give more money on lending to other people when the interest rate goes up. So if you look at the supply of loanable funds, this is what about is this basically, like this is supply of loanable funds. So it has got a positive relationship with interest rates. So the supply of loanable funds, who takes this supply? The people who are basically like, they through the supply, they make a demand for bonds. Like, say, for example, when you supply loans, you buy bonds. So it means that you create demand for bonds. And that's what you can see here. Like, this quantity demand of bond, when plotted against the interest rate, it has got a positive slope. All right. And what about this curve? This is a downward sloping curve. And this is the curve for demand for loanable funds. The companies demand the money which people actually are saving out of their incomes. All right. So they demand more. When they demand more, when businesses demand more loanable funds, when do you think businesses demand more loanable funds? Anybody would like to respond to this? When banks, the corporations demand for more loanable funds? Yes, Roha? Sir, the lower interest rate Very good, very good. When the interest rates are lower, they demand more. When the interest rates are higher, they demand less. That's what basically the kind of a relationship here. But you can think of these people as a supplier of bonds. The people who demand loanable funds, they demand loanable funds through bonds. They sell their bonds to the people and they get their money. All right. So I hope I am making sense to you guys. All right. So you have learned this in your basic microeconomics course. It's just Econ 101 kind of a things, that whenever you have these kind of demand curves or supply curves, you have got two kinds of movements, or like you have got two kinds of happenings. Some of the happenings cause movements along the curve. Like, say, for example, look at a simple demand curve which has got for which you are measuring price on y-axis and quantity demand on x-axis. This is a simple normal downward sloping demand curve.
And when you will have got the movement along the curve, like say, for example, when you will move from point A to point B, when will you do that? When this would happen? When will you move from point A to point B? Supply increase हो रही है. The movement along this simple demand curve is happening because of the price. The price is an endogenous variable. Price is a variable that is directly changing that actually the quantity demand has relationship with. And what do you think? When will you have got this kind of a situation when the demand curve will shift either upwards or it will shift to the downwards? What do you think? When this will happen? You know, like this movement along the curve happens when the endogenous variable changes. And shifting of the curve happens when exogenous variables change. Exogenous variables are those variables that you keep constant when you define a relationship. Like say, for example, when you explain the demand curve, how do you explain the demand curve? The demand curve is explained in such a way that keeping other factors constant. And what kind of factors you keep constant? सर इनकम में चेंज ना हो, अदर फैक्टर्स जो हैं वो चेंज ना हो, सब्स्टिट्यूट वो की अदर फैक्टर्स कौन प्राइस से? चेंज ना हो. जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. The और कौन कौन से? quality मतलब says सब्स्टिट्यूट के क्वालिटी चेंज ना हो, फैशन चेंज ना हो, quality मतलब says fashion, जी जी weather. very good. Yes, these are the factors which are exogenous factors, and if any one of them changes, it brings shifting of the curve. So the similar thing happens with the simple interest rates curves. And here basically we have been talking about the demand and supply of the bond curves. So there will be some factors which will bring movement along the curve, and there will be some factors which will cause shifting of the curves. And in principle, generally the changes in endogenous variables bring movement along the curve, and changes in exogenous factors bring, like, shift the curve. So a curve shifts whenever there is a changing in some kind of a factor that is, like exogenous, that is kept constant. Like say, for example, when you define the law of demand, you say keeping other factors constant, if a price of any commodity increases, its quantity demanded decreases. So to hold this relationship, you have to keep income, taste, fashion, weather, family size, population size, everything constant. Something similar we are doing Transport. here. Yes. So something similar we are doing here for the bonds, the demand curve of the bond. When this demand curve of the bond changes, shifts, I'm sorry. So you cannot expect this to change or shift when the price rate changes or the interest rate changes, because the price, whenever the price and interest rate changes, what happens with the demand curve of the bond? You get movement along the curve. Movement. But if the factors that you keep constant in defining this relationship change, that actually cause the shifting of the curve either rightwards or leftwards. When your curve will shift rightwards? When other factors No, like changes. rightwards. Why? When do you get the shifting rightwards? When the demand, when some factors cause this demand to rise. Your demand Price curve नहीं देखिए, decrease price. नहीं प्राइस डिक्रीज से तो आपकी शिफ्ट मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी. कोई ऐसा फैक्टर जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, अगर उसकी वजह से आपकी ओवरऑल डिमांड इंक्रीज करेगी, तो योर डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट. और external factors इनकी वजह से आपकी ओवरऑल डिमांड डिक्रीज करेगी, they will bring shifting, they will actually cause this demand curve to shift leftwards. So now we have to look at the factors that shift the demand curve of the bond. Now the first factor is the wealth. When you define the relationship between price of the bond and the quantity of the bond, or the interest rate on the bond and the quantity of the bond, you keep wealth constant.
what should happen when the wealth of people increases? When people have more wealth, what they will do? They demand more. They will demand more. increase in demand. And where your demand curve will shift? Upward. Upward. Yeah, to Right. the right, to the right. Upward to the right. Yes, upward to the right. And if the wealth shrinks, if the wealth decreases, the demand for the bond decreases and your bond demand curve shifts to the left. Left. All right. Downward. Now look at the expected returns. If you are expecting that interest rates in the future will be lower, if you are expecting that interest rates will go down in the future, what they will do with your return on the bonds? फुल आपको एग्जांपल के साथ, लाइक से फॉर एग्जांपल देखें आप लोगों ने, यू हैव लर्नड अबाउट इट, से फॉर एग्जांपल हियर, what is happening here? Look at this diagram. What is happening here? In the future, say for example you are moving from here, in the future you are expecting the interest rates to go down. अभी आज इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 33%. ये who was asking with the example? ये कौन Sir, पूछ? मैंने। जी आयशा, जी आयशा सुनिएगा प्लीज, आप मेरे साथ रहिएगा. This interest rate in the current period is what? 33%, right? You are expecting this interest rate to go down in the future, and you are expecting it to be 25% in the future. Are you with me? Yes, sir. So what is happening with the price of the bond here? The price increase हो रही है. Increase हो रही है. Like the bond that you bought for $750, now you can sell it for $100, $800. All right. Now suppose the interest rate falls further from 25% to it goes to what? 17.6%. Now due to decrease in the interest rates, the price will further increase. ऐसा ही होगा आयशा? Yes, sir. Good. So this is what basically is an example of it. Perhaps it makes things clear to you. So please, like, just keep this particular point in your mind, that what is happening here, that your demand curve of the bond will increase. You people will be demanding more bonds if they are expecting their prices to rise in the future. देखिए कोई भी शख्स जो दुकान पे चीजें बेच रहा होता है, अगर एक चावल वाला है, उसको ये बात पता हो कि फ्यूचर में चावल की कीमत बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा? पहले से स्टॉक कर लेगा. जी, that is what happening here. That is what happening here, and this is happening क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा opposite relationships हैं, इसलिए उनको इतना easily comprehend करना थोड़ा सा मुश्किल है. But you can actually do it if you are just really understanding the relationship between the interest rates and the price of the bonds, and you are looking at the situation. That is what is happening. Now look at the situation B. In the question, in the part number 2, this is situation B. If expected inflation in decreases, expected inflation decreases. Expected inflation का मतलब क्या? आप expect कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो दूसरी जो चीजें हैं, बॉन्ड के अलावा जो आपके पास चीजें हैं, गुड्स हैं और कमोडिटीज हैं, उनकी कीमत कम होने वाली है. तो ऐसी सूरत में आपका जो डिमांड कर्व ऑफ द बॉन्ड है वो इंक्रीज कर जाएगा. आपके डिमांड ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज. व्हाई एंड हाउ? Sir, Now the second point, the B point in the second situation is that if expected inflation fall. देखिए, what do you understand by inflation? Inflation का क्या मतलब होता है? General increase or persistent increase in prices of commodities. जब किसी चीज की commodity के prices बढ़ते हैं, अगर commodities के prices बढ़ते हैं, तो जो लोग उनको बेच रहे होते हैं, उनको फायदा होता है या नुकसान होता है? तो फायदा होता है. फायदा होता है. और अगर वही चीजों की कीमतें बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएं, या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो वो आज चीज खरीद रहे हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कमोडिटीज,
जो रियल कमोडिटीज आज आप खरीद रहे हैं, फ्यूचर में उनकी कीमतें कम हो जाएंगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? गिर What? जाएगा. That will fall. All right. Now, the people actually, say for example, think about yourself as a businessman. You have two choices of making investments. Either you invest in real goods or you invest in bonds. When will you increase your investments in bond? When your returns on other commodities will fall. ऐसा ही है. मिसाल के तौर पर मैं एक दुकान में चीजें बेचता हूं, मैं दुकान पे चीजें कम कर दूंगा अगर मुझे उनकी कीमतें जो है वो कम लगेंगी कि फ्यूचर में कम होने वाली है, और जो पैसा मेरे पास बचेगा मैं उससे बॉन्ड्स खरीद लूंगा. ऐसा होगा या हो सकता है भाई? सर रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं जो बात कह रहा हूँ, देखें ये अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया अगर आपको समझ में नहीं आता है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक चीजें बेच रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो प्लास्टिक की गुड्स बेचता हूँ, और अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में प्लास्टिक के गुड्स के प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो इसका मतलब मैं प्लास्टिक की गुड्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा. ऐसा ही है? Yes, sir. यस सर. गुड. अच्छा, अब जो पैसा मैं बचाऊंगा प्लास्टिक के गुड्स में इन्वेस्ट ना करके, उससे मैं खरीदूंगा बॉन्ड्स. देखिए Yes, sir. यहाँ पर दो चॉइसेस होती हैं एक बिजनेसमैन के पास, या तो वो रियल गुड्स में इन्वेस्ट करे या फाइनेंशियल गुड्स में इन्वेस्ट करे. रियल गुड्स क्या है? ये चीजें हैं, सामान है, फर्नीचर है, ये सब चीजें रियल गुड्स हैं. तो रियल गुड्स में आप इन्वेस्ट कब करते हैं? जब आपके पास रियल गुड्स का रिटर्न ज्यादा हो. और फाइनेंशियल गुड्स में कब आप इन्वेस्ट करते हैं? जब इनकी फ्यूचर वैल्यूज कम हो जाए रियल गुड्स की. जब इन पे रिटर्न ज्यादा हो. देखिए जिस चीज पे रिटर्न ज्यादा होगा उस पे ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे. तो ये सेकंड रिलेशनशिप को प्लीज समझने की कोशिश करें कि if expected inflation in your country, if inflation in your country is expected to fall in the future, what will happen? The demand for the real assets will डिक्रीज. decrease, or relative return on the bonds will increase. जब लोग रियल गुड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल में करेंगे, तो डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड्स. Think about the point C. It's a very simple point. Expected return on other assets, say for example stocks decreases. अगर स्टॉक्स पे रिटर्न्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा बॉन्ड मार्केट में? बॉन्ड ज्यादा डिमांड करेंगे. जी, बॉन्ड Increase ज्यादा हो डिमांड जाएगा. करेंगे. जी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि लोग शेयर्स नहीं खरीदेंगे, बल्कि शेयर्स जो नहीं खरीदेंगे, जो पैसे उनके पास बचेंगे, उन पैसों से वो क्या करेंगे? बॉन्ड ले लेंगे ज्यादा. जी, बॉन्ड ले लेंगे ज्यादा. तो और बॉन्ड्स, सारे- the demand curve or the demand curve for the bonds will shift to the Right राइट side. में. to the राइट right. साइड. राइट. Very good, very good. ये आप लोग बिल्कुल साथ साथ जो चल रहे हैं वो they will be learning about it, और जो साथ नहीं चल रहे हैं they cannot. Now the third factor is the risk. If the risk of bonds decreases, अगर bonds पे जो risk है वो decrease होगा तो क्या होगा? लोग ज्यादा बॉन्ड डिमांड करेंगे. जी ऑफ कोर्स, बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है. एंड डिमांड का फॉर द बॉन्ड शिफ्ट्स आउटवर्ड्स. रिस्क ऑफ अदर एसेट्स इंक्रीजेस. देखिए बॉन्ड के मुकाबले में शेयर ज्यादा अगर रिस्की हो जाता है तो फिर क्या होगा? सर तब भी बॉन्ड ज्यादा डिमांड होगा. जी बिल्कुल, लोग पैसा अपना शिफ्ट करेंगे रिस्की एसेट से डिमांड बॉन्ड्स के अंदर. तो और बॉन्ड डिमांड कर तो बॉन्ड के साथ क्या होगा? राइट वर्ड ही शिफ्ट होगा क्योंकि बढ़ जाएगी. जी बिल्कुल. द लास्ट फैक्टर is the liquidity. What happens with the liquidity? If the liquidity of the bonds increases, what should happen with the demand for the bonds? सर आई थिंक वो बढ़ेगी क्योंकि Increases. चेंज करना आसान होगा. Of course, very good. So the demand curve for the bond will shift to the
Right side. Right. But Okay. The last factor, the liquidity on other assets decreases. अगर दूसरे assets पे decrease करेगी, तो भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि रिलेटिवली वो रिस्क कम है और लिक्विडिटी कम है जी उसकी bonds की ज्यादा है demand सॉरी ज्यादा बढ़ेगी. ठीक, तो bonds demand का will shift to the राइट सर very good. So this is a summary diagram, factors that shift demand curve for the bonds. Some factors shift demand curve for the bond rightward, and some factors shift demand curve of the bond leftward, depending on that whether it is the factor which is changing is increasing demand of the bond or decreasing demand for the bond. Okay, something similar happens on the supply side. You know, the supply side, who supplies the bonds? organization. Organizations. Yes, very good. And when they supply bonds more, like when businesses want to borrow more, like want to borrow, like they want to borrow higher amounts from the market. कब borrowing ज़्यादा करेंगे businesses? प्राइस डिक्रीज होगा फिर. सर जब उन्हें फंड की जरूरत होती है तब वो पब्लिक फंड जमा करते हैं. फंड की जरूरत कब होगी उनकी? When these businesses will supply more bonds, it means that when they will be इन्वेस्टमेंट borrowing more. अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती जी, जब उनके पास when they have got higher investment opportunities. लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट एक्सपेंड कर रही है, मार्केट में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, सारा पैसा आप खुद नहीं लगा रहे होते, यू बोरो मनी फ्रॉम द पीपल. ऐसा ही है? हाँ या ना तो बोले यार. Yes, sir. Yes, sir. Good. So when the business cycle expansions take place, when the businesses cycle expand करने का मतलब क्या होता है? आपका business cycle आपको पता है ना, business cycle कैसी होती है? देखिए ना business cycle आप लोगों Yes, ने, sir. जब आपके पास टॉप पे जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, और बॉटम पे हो तो इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी सबसे कम है. Yes, sir. ऐसा ही है. तो ये बेसिकली जो है वो जब आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही होती है तो यू हैव गॉट मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड व्हेन यू हैव गॉट मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यू सप्लाई मोर बॉन्ड्स. और जब इस तरह से होगा तो आपका बॉन्ड कर्व, जो सप्लाई कर्व का जो सप्लाई जो कर्व है बॉन्ड का, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ऑलराइट, now look at this expected inflation, and you can link this particular point with the previous slide that I was explaining you from the perspective of the demand for bond. What will happen if the expected inflation in your country increases? What will happen if expected inflation in your country increases? Now think like a businessman. Earlier on, you were thinking as an investor or a household. Yes. सर प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो जो मतलब बेचने वाला होता है उसके तो मतलब फायदा ही होगा ना. Very good. तो वो उसका सप्लाई बढ़ेगा, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा. हाँ एक्सपेंड करेगा अपने बिजनेस. Right. और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए he will need more money, and that money he will borrow from the market through bonds. So he will supply more bonds into the market. And when he increases supply of the bonds, what will happen with the supply curve of the bond? सर राइटवर्ड शिफ्ट It होगा. will shift to the right. Very good. Now look at the point number 3. Government activities. What happens if the government's deficit increases? The fiscal deficit. है. Say again, please. थोड़ा सा loudly बोलिएगा. बॉन्ड्स की सप्लाई इंक्रीज होता है सर. क्यों होगी दरअसल? Can you link it? Like, can you explain the relationship? उनको रेवेन्यू जमा करना होगा अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो इसलिए वो सप्लाई ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे ताकि पब्लिक रेवेन्यू गैदर कर सके. आप बात सही कह रही हैं, लेकिन टर्म्स थोड़ी सी गलत यूज कर रही हैं. तो अगर थोड़ा सा टर्म्स भी आप सही यूज करें तो बात आपकी खैर सही है, लेकिन टर्म्स आपकी गलत हैं. सर मतलब अगर बजट डेफिसिट में होता है तो इन्फ्लेशन आई थिंक से बढ़ जाती है, इस वजह से तो नहीं हो रहा.
ये आप कौन से पुराने गाने सुन रहे हो मैंने? Okay. देखिए, when the government deficit increases, what is the government deficit? How do you define government deficit? इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है और स्टॉक में कम। देखिए, ये बेसिकली देखिए, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आप थोड़ा सा इसका ख्याल सर रखें। इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है इन हाँ, देखिए, कंपैरिजन। गवर्नमेंट डेफिसिट जो है वो फिस्कल डेफिसिट होता हमारे है, वो ट्रेड डेफिसिट की जो बात है कर रही वो है। यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड डेफिसिट। देखिए, जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसमें होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की रेवेन्यूज। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देखिए, आपके घर के अंदर जब डेफिसिट होगा तो उसका मतलब क्या होगा? व्हेन योर हाउस गोज इनटू डेफिसिट, आपके घर में डेफिसिट कब होगा? जब आपके घर में इनकम कम सर हो। एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। जी, वेरी गुड। एक्सपेंसेस एक्सीड तो कर जब जाता है अगर रेवेन्यू किसी घर के अंदर इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो वो घर वाला क्या करता है? बोरो करता है। जी, बोरोइंग करता है, और यही गवर्नमेंट करेगी। जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट लोगों से बोरो करती है। देखिए, गवर्नमेंट के बजट को, डेफिसिट को फाइनेंस करने के दो तरीके हैं। या तो वो नोट प्रिंट करेगी, या वो बोरोइंग टैक्स करेगी। या लेगी। बोरोइंग करेगी। देखिए, बोरोइंग, टैक्स तो पहले से उसने डिसाइड किया हुआ है। यही वो फर्क आ रहा है कि उसके पास टैक्स की कलेक्शन हो रही है 100 रुपए, लेकिन उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो है 120 रुपए। अब फर्क है 120 रुपए एक्सपेंडिचर्स में और 100 रुपए की इनकम में। अब ये 20 रुपए वो कहाँ से लेकर आएगा? जिस तरह आप अपने आप को सोचिए कि आपके घर में एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं 10,000 रुपए के, और आपके पास सैलरी आ रही है 8,000 रुपए की। तो 8,000 रुपए आपकी इनकम है, 10,000 रुपए आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। जो 2,000 का डिफरेंस है, ये कहाँ से लाएंगे आप? बोरो ही करेंगे सर। बोरो करके। जी बिल्कुल, बोरोइंग करते हैं। फैमिलीज भी बोरो करती हैं, गवर्नमेंट भी बोरो करती है। और गवर्नमेंट बोरो किस तरह करेगी? सर ये डोमेस्टिक बोरोइंग की बात कर रहे हैं। जी देखिए, दोनों किस्म की बोरोइंग हो सकती है। गवर्नमेंट दोनों डोमेस्टिक भी करती है और इंटरनेशनल बोरोइंग भी करती है, फॉरेन बोरोइंग भी करती है। तो दैट ऑल डिपेंड्स। जिस तरह गवर्नमेंट सुकूक बॉन्ड्स इशू करती है बाहर के ममालिक में, यूरो बॉन्ड्स इशू करती है, तो ये फॉरेन बोरोइंग है। लेकिन डोमेस्टिक बोरोइंग भी होती है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों से बोरो करे, ट्रेजरी बिल्स से बेच वो करे, लोगों को सेल करे, या कोई और किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करे। समझ रहे हैं अभी आप लोग बात? तो अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज करेगा तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड के साथ क्या होगा? इंक्रीज हो Increase हो जाएगी सर। जाएगा। जी बिल्कुल, दे विल सप्लाई मोर बॉन्ड्स, and through supplying bonds they will be demanding or they will be getting more money. All right, so I hope it makes sense to you guys. Again, if you have got any questions you can ask please. ये सारा एक्सप्लेन है इसके अंदर, आप उसको देख सकते हैं। Okay, now this is through the graphs. When something's actually, you know, like when आप देखिए कि आपने देखा था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो दोनों साइड्स पे इफेक्ट कर रही है, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स पर भी और expected inflation is shifting both curves, demand curves as well as supply curve. ऐसा ही हो रहा है ना? यस सर, यस सर। Expected inflation is affecting both demand curve of the bond and supply curve of the bond. तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा फैक्टर होगा, देखिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, आप you would have learned that in your microeconomics course as well, that there are some factors that only affect the demand side of the market, and there are some factors that affect only the supply side of the market, but there are some factors which actually bring changes into on both sides of the market. Like say for example, if expected inflation in your country increases, expected inflation अगर increase करेगी तो लोग क्या करेंगे? bonds की स्टॉक डिमांड करना शुरू बढ़ा कर देंगे। देंगे। लोग फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकाल के रियल मार्केट में लगाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? लोग, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देखिए जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं जो चीजें बेचता हूं उनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो कीमतें बढ़ने से क्या होगा? एज ए प्रोड्यूसर मुझे क्या फायदा होगा?
अगर जो चीजें मैं बेच रहा हूँ अगर उनकी कीमत बढ़ेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट earn ज्यादा करेगा। होगा। वेरी गुड। और जब प्रॉफिट ज्यादा होगा मुझे चीजों को बेचने में, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कब इन्वेस्ट करूंगा? बॉन्ड की डिमांड जो है मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। देखिए ये बेसिकली जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, सॉरी, जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर बॉन्ड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? और सप्लाई ऑफ बॉन्ड क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों प्राइस इंक्रीज बढ़ हो गई जाएगा? उसकी, अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई तो इसलिए वो उसके नहीं साथ नहीं, साथ देखिए इंक्रीज हो देखिए गई। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचेगा? मतलब फ्यूचर में प्राइस सप्लाई बढ़ने वाली है तो हाँ, तो क्या सोचेगा वो? कि ज्यादा सप्लाई करे जो ज्यादा, हो। हाँ, जी, ज्यादा ताकि सप्लाई नहीं, आगे अब से फिर ज्यादा ज्यादा। सप्लाई करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसे चाहिए उसको। जी और ज्यादा पैसे कहाँ से लेगा? वो मार्केट से बोरो करने की कोशिश करेगा। और उसके लिए क्या करेगा? वो जी, बॉन्ड को सप्लाई करेगा। अब भाई प्लीज अपने माइक्स को यस बंद सर। रखें भाई। आप इफ यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली सर ये लास्ट पॉइंट प्लीज वापस से जी जी मैं बताइएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको मैं, लेकिन प्लीज लाइक आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू टर्न ऑफ योर माइक्स ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। देखिए, यू आर टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेस पर्सन्स माइंड ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आई वांट टू एक्सपेंड माय इन्वेस्टमेंट्स। एंड व्हाई डू आई वांट टू एक्सपेंड माय इन्वेस्टमेंट्स? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस ऑफ माय गुड्स टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। आई वांट टू इन्वेस्ट more in the production of goods. To get more, to do more production, I need more money. And where will I get this money from? Where will I get this money from? People From through people. From bond. Yes, people very and good. from And if I want people to make, like, just give this money to me, I will have to give them bond. The bond supply will increase. Are you getting my point? So the same thing, the expected increase in inflation will cause demand curve to shift downward and cause supply curve to shift rightward. It's leftward, and it is overall price level of the bonds will fall. And if that effect is the same, the relationship will remain the same. The quantity will remain the same. One thing is nullifying the other thing. One side is nullifying the effects on the other side. On the one side, the people are investing less into the financial market, and on the other side, they want people to make more investments into the financial, into this bonds market, so that they could get money. So the total amount does not change. एक जो positive change है उसको negative change nullify कर रही है. This is another theory from which you can find out the equilibrium interest rates, and the name of this theory is liquidity preference analysis. Liquidity means cash flow, kind of cash or assets like cash. Preference means priority, yes, how much cash do you want to hold? Yeah, how much cash do you want to hold? So preference means priority. Sorry for the writing here. Okay. So priority. So liquidity preference analysis. This theory was explained by Keynes, and before explaining this theory, I perhaps you will be able to recall the demand for money analysis. Why people demand money? You must have heard that Keynes presented his theory about the demand for money. Do you know why people demand more money and when they demand more money? So to fulfill their needs. Like, say for example, Aisha. सर किसी भी चीज के लिए पैसे तो चाहिए ना, बार्टर सिस्टम है नहीं, और बार्टर सिस्टम होता भी तो कुछ आपके पास
होना चाहिए। जी जी, very तो good. अगर And आपको this is अपनी called नीड्स the पूरी transaction करनी, demand for money. This is called transaction demand. You need cash for making transactions. ऐसा ही है? यस सर। And what else you need cash for? Sir, like we have a very uncertain future. Like could be हो सकता है you need it for like medical equipment or कुछ भी चीजें unexpected है, कुछ भी हो सकता है, pandemic आ That गया is, तो yeah, that is called the precautionary demand. That is called the precautionary demand, as Roha is explaining, that there are quite uncertainties involved in the future. Like, say, for example, you might need like, medical help. You might need something like, which you were not expecting. So you need to have cash for these kind of things. This is called precautionary demand. And as Arisha has written here, that another kind of a demand is speculative demand. Arisha, will you explain that on mic for us, this speculative demand? Arisha, will you try to explain? Yes. Tehzeeb, yes. तो अपनी मतलब बिजनेस वाली जो अपनी नीड है उसको पूरा करने के लिए Business value need, what do you mean by the business value needs? आई मीन इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। Speculative का मतलब ये होता है, like, that is what specifically this term is used for the future. Like, you are speculating, you are expecting the prices or the profitability into the businesses to rise in the future. So you don't want to make investments now, rather you want to make investments in the future. So to just make investments in the future, you actually, like, hold cash now, but you want to make investments in the future, right? So what actually Keynes does, he explains that there can be three types of demands for money. One is called the transaction demand, the other is called the precautionary demand, and the third one is called the speculative demand. So whatever is the reason for that demand, what happens when you demand for money? You keep cash. And when you keep more cash with you, you supply less money into the market, or you basically have got more demand for cash. And if you look at, like, this particular kind of analysis tries to determine the interest rates from demand for cash and supply of cash. If the demand is more and supply is less, what will be the interest rates? Like, what kind of interest rates will have? Very good. Yes. If the demand for cash is higher than the supply of cash or supply of money, your interest rates will be higher in your country. Similarly, if the demand is lower and the supply is higher, your interest rates will be lower. And the opposite can be the case, like, when the supply is more and demand is less, the interest rates will be lower. That's what the analysis is all about. What Keynes assumes? Keynes assumes that money, when you hold cash, what do you lose? sir, interest rate. Interest. Sorry. Yes, Keynes assumed that money has interest rate is equal to 0. As interest rate increases, if the interest rate in the market increases, what should happen with the demand for money? Decreases. It should decrease, of course. You actually, if you are holding cash, it means that you are sacrificing interest on it. If the interest rate goes up, it means your sacrifice increases. If you are sacrificing more, like if your interest rate is increasing, you are losing more money on the cash. So if you are losing more money on the cash, what will you do? रिपीट करें सर। If you lose more money on cash, what will you do? सर हम उसका बॉन्ड ले लेंगे, शेयर ले लेंगे, या You फिर will hold बैंक में less cash. Yes, of course. आप bond खरीद लेंगे, you will hold less cash. As interest rate increases, look at this linkage here. As interest rate increases, what happens? Relative return on money decreases. It becomes costly to hold cash, and equivalently opportunity cost of hold. The money demand will
decrease. Yes, decrease. If the interest rate increases, the money demand, keeping other factors constant, decreases. So the interest rate and money demand has what kind of relationship is this? Inverse. Inverse. If this increases, if this increases, this decreases. If this decreases, I hope I'm making sense to you guys, right? Now, who supplies money? Now, like this is the final conclusion, I'm sorry. The final conclusion is that demand for curve for money has what kind of slope? Downward. Yeah, because of this relationship. Now, who supplies money? Central bank. Yes. And does this supply of money depend on interest rate? Yes, sir. Okay. How? सर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी सर. क्यों सप्लाई ज्यादा होगी? सर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो चाहते हैं कि देखिए, एक बात तो आपको जहन में रखनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. Central bank does not supply money to earn interest rate on it. How does the central bank decide about the supply of money? आपका क्या ख्याल है, मनी सप्लाई को कैसे डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक? people have no more old money. नहीं, लाइक देखिए ना, अगर आप इफ यू थिंक लाइक अ सेंट्रल बैंकर, आपने डिसाइड करना है कि मुल्क में कितने सप्लाई ऑफ मनी होगी. हाउ विल यू डिसाइड अबाउट दिस? सर बजट डेफिसिट के थ्रू आई थिंक सो. देखिए, हाँ बिल्कुल. देखिए, असल में जो सेंट्रल बैंक है, देखिए उसका काम ये होता है कि मुल्क में प्राइसेस स्टेबल रहें. प्राइसेस स्टेबल कब रहेंगे? जब इन्फ्लेशन नहीं होगी. और इन्फ्लेशन कब नहीं होगी? जब ज्यादा मनी सप्लाई नहीं होगी. और प्राइसेस स्टेबल तब भी रहेंगे जब प्राइसेस कम नहीं होंगे. जब प्राइसेस कम होने का मतलब है डिफ्लेशन नहीं होगी. डिफ्लेशन का मतलब है मनी सप्लाई कम नहीं होगी. तो वो एक मनी सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. जिस तरह आपकी बॉडी में, जिस तरह देखें ना, आपका जो हार्ट है, हार्ट क्या काम कर रहा होता है? Supply for blood. ब्लड सेलेक्ट. जी, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है. अगर इस सप्लाई का रेट बढ़ जाए, यस सर. ज्यादा पंप करना शुरू कर दे ब्लड आपका हार्ट, तो क्या होगा? नुकसान होगा सर. जी. और कम कम पंप करेगा तो फिर भी नुकसान. तो फिर भी नुकसान. नुकसान है. तो हार्ट का काम क्या है? सप्लाई ऑफ ब्लड. सप्लाई ऑफ ब्लड को स्टेबलाइज रखता है. और जब ये अनस्टेबल होती है तो इसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम है. खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक्स हैं या और कोई सिचुएशंस हैं. तो ये जो हार्ट अटैक की सिचुएशंस आती हैं और जो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उनमें ये होता है, जिसका ब्लड प्रेशर किसी का होता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी जो ब्लड है वो ज्यादा पंप हो रहा है, ज्यादा तेजी के साथ पंप हो रहा है. ऐसा ही है ना? यही Yes, काम sir. सेंट्रल बैंक कर रहा होता है इकोनॉमी में. और ये जो ब्लड है, आप इसको समझ लें कि वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहा होता है. अगर इंसान की बॉडी में सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो कम या ज्यादा होता है तो उससे उसकी बॉडी इफेक्ट होती है. बिल्कुल इसी तरीके से किसी कंट्री में अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उससे उसकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है. तो सेंट्रल बैंक का काम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है. सेंट्रल बैंक डज नॉट सप्लाई मनी by looking at the interest rates. The consideration of the central bank for making decisions about the supply of money are relative to the stability in the economy. I hope I am making sense to you guys, right? Yes, sir. Good. So the supply of money does not depend on interest rates. I'll be talking about the market equilibrium in a minute. Look at this. Look at this curve, this vertical curve. What does this vertical curve show? मनी सप्लाई.
money supply, and money supply is a vertical curve. It means that the money supply does not change no matter how much the interest rate changes. Do you get my point? Yes. Yes. sir. Good. And what about the demand for money? Decreasing. It has a negative And relationship with the interest rate. Yes. If the interest rate goes up, the demand for money, goes down. yes. If the interest rate goes down, the demand for money goes up, right? So the point where these both curves meet together, the point where these two curves meet together, what will you get from that Equilibrium point? point. Equilibrium Equilibrium interest rate. point. Yes. So here you can see Equilibrium interest rate. yes. समझ में आती है मैं बात आप लोगों को? Yes, sir. Good. तो ये जो आपका पॉइंट सी है ये क्या है? इक्विलिब्रियम interest rate. Interest rate. Interest This is rate. the third method of determining the interest rate. First method was, which was the first method? तो वो इंक्रीज होगी, ज्यादा डिमांड करेंगे मनी. जी बिल्कुल. If the income is higher, people want to buy more goods. People buy more goods if their income goes up. To buy more goods, they need more cash. To buy more goods, they need more cash, and more cash means more demand for money. तो चूंकि आपके पास जो है वो मनी सप्लाई सेम रहती है तो क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ किसी पे अगर मनी डिमांड बढ़ जाए मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएगी. राइस आई थिंक डिमांड बढ़ने से क्या आपका प्राइस interest rate होंगे. बढ़ेगा. प्राइस बढ़ेगा. Increase. किसी चीज की सप्लाई अगर कांस्टेंट हो और उसकी डिमांड बढ़ Yes, जाए तो sir. क्या होगा? Interest rate बढ़ जाएगी. प्राइस बढ़ जाएगा उसका ना. Yes. और यहाँ प्राइस इसका इंटरेस्ट रेट है. तो ये सारा का सारा सप्लाई भी मनी ऑफ द मनी भी चेंज होता है. सप्लाई ऑफ मनी अगर चेंज होगा देन सेंट्रल बैंक अगर खुद से डिसाइड करता है कि सब वो इंटरेस्ट रेट पे बेस नहीं करता, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक खुद से डिसाइड करता है कि अब जो है वो मनी सप्लाई को हमें कम करना चाहिए तो फिर आपका मनी सप्लाई का जो कर्व है वो क्या होगा? शिफ्ट होगा सर. जी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक. सर वो लॉन्ग रन में होता है ना, शॉर्ट रन में तो Short इतनी run में तेज क्या? से नहीं शिफ्ट होता. मतलब ये that मनी is सप्लाई course. का जो कर्व है जी जी बिल्कुल. वो लॉन्ग रन में. लॉन्ग रन से मुराद ये कि देखिए जिस तरह पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक का जो एक वो ऑपरेशंस हैं उसमें वो दे डिसाइड अबाउट इट कि बेसिकली आपका जो है वो हर 2 महीने के बाद सेंट्रल मनी जो आपकी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, दैट विल बी डिपेंडिंग और 2 महीने के बाद चेंज होता है डिसीजन. कोई सवाल आपके जहन में तो पूछिए.